Hi everyone, welcome back. So in my today's video, I'll share how to make these beautiful coasters. I have made these coasters from plaster of Paris. So let's begin. Basically हम इस टाइप की डिश लेंगे और you can use any molds of any shape that you like. Now let's cover this nicely with a cling wrap. हम ये इसलिए wrap कर रहे हैं ताकि जब POP पेस्ट ड्राई हो जाए तो उसे निकालने में आसानी हो. Now let's make the POP mixture. So here I have taken few spoons of plaster of Paris and to this we will add फेविकॉल and water. पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना because we need a thick consistency. So our paste is ready. So as you can see, this paste is quite thick. If it is very thin, then the coasters will turn out to be very brittle. अब इस पेस्ट को डिश में स्प्रेड कर देंगे. To give an even finish, we will use wet fingers to make the upper surface smooth. Now let it dry overnight. अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और हम इसे निकाल देंगे. क्योंकि हमने एक क्लिंग फिल्म लगाई थी बेस में, इसलिए इसे निकालना काफ़ी इजी हो गया. इसी तरह से मैंने 4 कोस्टर्स बना लिए. इनके सरफेस और एजेस को स्मूथ बनाने के लिए वी विल मेक यूज़ ऑफ दिस सैंड पेपर. ये सैंड पेपर कोई भी लोकल शॉप में ईजिली अवेलेबल होता है. Rub this very gently on all the sides. देखिए ये काफ़ी स्मूथ और फिनिश्ड लग रहे हैं. Now with the help of a pencil, let's draw designs of our choice. Use your own creativity. Feel free to choose designs from internet. There are lots and lots of designs available. तो आप कोई भी designs choose कर सकते हैं. And my designs are ready. And here comes the part which I enjoy the most. I'm going to paint these coasters using acrylic color. Our first coaster is ready. So let's paint the other coaster as well. I'm going to use this golden glitter pen to create a design.
रेड, ब्लैक एंड वाइट कलर्स में मैं थर्ड कोस्टर पेंट करने वाली हूँ। And this is how the coaster looks like. इस कोस्टर में मैंने डिफरेंट कलर्स पेंट कर दिए हैं एंड सिल्वर एक्रेलिक कलर से मैंने फ्लावर्स बना लिए हैं। So this one is also ready. So I hope you all have liked this video. Don't forget to like, share and subscribe. Also don't forget to leave your comments below. Bye.